Hello, everyone. I hope I am audible and properly visible. Yes or no? Hmm. Just a minute. Let me have a quick tech check. Hmm. Everything seems to be fine. Yes. Sorry, I was thinking there is some particular thing which is missing, but I'm now sure that everything is fine. So, hello everyone. Welcome and good morning. I hope तुम्हारा weekend अच्छा रहा हो and I hope तुम्हारा week अच्छा चले. And without a delay, let's discuss कि last एक दिन दो दिन में क्या हुआ. Okay, so जो कांग्रेस की protest थी AI Impact Summit में, that was something which got like eyes on entire social media and media. The Prime Minister, the TV media, the print media, you can say in the social media, there were people who were supporting, there were people who were opposing, there were tons of different things जो हमने देखा. So overall फैक्टर में ये कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट थी वो बहुत ज्यादा न्यूज में थी. सेकंड वाज जो ट्रम्प है उसके जो स्टैंड्स है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अगेन लाइक हिज आइडियाज लाइक तो जिस तरीके से उसने ओवरऑल फैशन में चीजें बोली हैं मतलब भाई ने उठा के कुछ तो भी बोला हुआ रिसेंटली भी ग्रीनलैंड का भी आएगा ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ने यूज लाइक यू नो थैंक्स फॉर द डील एंड अदर थिंग सो वो और ओवरऑल फैशन में इट वाज नॉट अ वेरी गुड वीक फॉर द ट्रम्प टेक्निकली आई एम वेरी हैप्पी इस आदमी का जो पर्टिकुलर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ माहौल है उसको सुधारा गया. Right. So yes, I am happy. So Trump was in news. Then अगर हम ओवरऑल दूसरी चीजों की बात करें तो एप्स्टीन फाइल इज स्टिल टू बी डिस्कस्ड है ना. एप्स्टीन फाइल डिस्कस हुए ही जा रही है हुए ही जा रही है हुए ही जा रही है. सोशल मीडिया भरा पड़ा है. द पीपल आर रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स पीपल आर like after reading those documents they are getting it posted in the social media and बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है मतलब कोई कह रहा है कि they were planning to kill the entire Arab race by 2032. They were planning the World War III. They were talking about how the world leaders should dominate. They were talking about how these things are going to happen. ये सारी चीजें जो है वो हम देख रहे थे. And there is this particular one thing still I cannot confirm क्योंकि मैंने नहीं चेक किया. But सोशल मीडिया में ये भी आया था कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है that was also planned जिससे हम यूरोपियन यूनियन में एनर्जी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकें और उसके कारण डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे स्पेशली अमेरिका में बढ़े वहां से एनर्जी सप्लाई और बाकी चीजें बढ़े तो like things are getting a lot of attention मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ उसमें था. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट अगर मैं इस न्यूज़पेपर आज की बात करूं तो इंडिया ब्राजील रिलेशंस जो हैं उसकी काफी ज्यादा आज आपको वो देखने को मिलेगा. सो जो लुला डिसिल्वा हैं वो एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी वो मिले. उनने काफी कुछ बात की. जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के उन्होंने बोला कि द कंट्री शुड नेगोशिएट है ना. And country should what we can say form a negotiating bloc against the US tariff policies. Hi Daksh है ना. उन्होंने बोला है कि दिस इज समथिंग जो कि बुली है. सो अगर अमेरिका इस टाइप की चीजें बोल रहा है तो लाइक इंडिविजुअल कंट्रीज व्हिच आर हैविंग डिस्कशन विद अमेरिका दे शुड हैव दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड ब्लॉक टू नेगोशिएट द टैरिफ एंड लाइक चूंकि ये दोनों कंट्री 50% टैरिफ से हिट कर गए थे तो थोड़ा सा वो तो है. फिर यूएनएससी रिफॉर्म पे बात हुई. फिर उन्होंने ब्रिक्स के बारे में बात की. उन्होंने जो व्हाट वी कैन से दूसरी इंडियन पॉलिसीज जो है इंडियन जो कंसर्न है उनको भी उन्होंने प्लेस किया. तो ओवरऑल फैक्शन में इंडिया ब्राजील वाज इन न्यूज. तो ये एक मेजर न्यूज है आज के पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में. फिर जो मोदी जी हैं ही इज विजिटिंग मोदीज विजिट इन इजराइल
यस, मोदी की जो विजिट है इसराइल में, उसके पहले ही कुछ कंट्रोवर्सीज आ रही है। जो ओपोजिशन लीडर है ना, उन्होंने सीधे तौर पे बायकॉट किया है। बोल दिया कि भाई हम बायकॉट करेंगे मोदी जी के एड्रेस को, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की डिमांड्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वो है, क्या कहना चाहिए, जजमेंट्स हैं, पावर्स हैं, फिर जो नेतानियों की हरकतें हैं, इन सारी चीजों को लेके उन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं दिया, तो मोदी जी के एड्रेस को दे माइट बायकॉट। हेलो ऋषपर्णा। फिर जैसे हम परेशान होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर इरेगुलरिटीज एंड जो टेररिज्म है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, वैसे पाकिस्तान भी अभी परेशान हुआ। तो इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, सॉरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में राइट स्ट्राइक्स हुई हैं। सो वो एक पर्टिकुलर आज की न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट रहेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये तुम कई सालों से देख रहे हो, तो महीनों से, एंड वो अभी भी देखने ही वाले हो। बंगाल एसआईआर, ये दोनों चीजें आज भी न्यूज में देखेंगे तुम। एंड जो एक टारगेट था अभी रिसेंटली, लाइक 10-15 डेज बैक, हमने ये बात की थी कि अमित शाह ने ये बोला है कि हम 31 मार्च तक जो नक्सलिज्म है उसको लगभग पूरा खत्म कर देंगे। तो जो रेड कॉरिडोर है उसको पूरा खत्म कर देंगे। तो बिग न्यूज इज कि तेलंगाना में एक बड़े जो वो है बड़ा वो जो है माओइस्ट लीडर जो है, उसने क्या किया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है। दैट इज, क्या नाम है उनका, देव जी, है ना। तो सीनियर माउस लीडर देव जी जो है उसने सरेंडर किया हुआ है। एंड इसके कारण एक बड़ा डेंट पड़ेगा माओइस्ट लीडरशिप को, क्योंकि जब लीडरशिप खत्म होती है तो चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं, और वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज है। उसके बाद तमिलनाडु में अब सीट शेयरिंग पॉलिसीज जो है वो चल रही हैं कि भैया कांग्रेस और डीएमके वगैरह सीट्स कैसे सॉल्व करेगी। गुड न्यूज कर्नाटका से गाइस, है ना, कि वो जो 16 ईयर के किड्स हैं, अंटिल द एज ऑफ 16, कर्नाटक जो है वो सोच रही है कि कर्नाटक गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग अ लॉ रिलेवेंट टू द सोशल मीडिया यूज एंड एक्सेसिबिलिटी और फोन रिस्ट्रिक्शंस फॉर द चिल्ड्रन बिलो 16। तो ये एक अच्छी वो आ रही है। तमिलनाडु टेक्सटाइल क्राइसिस इज देयर, कि तमिलनाडु जो है वहाँ पे लगभग 300 मिल्स जो है वो या तो शट डाउन हो गई है, या ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ शट डाउन, लाइक एट द वर्ज ऑफ शट डाउन दिख रहे हैं। अनदर गुड न्यूज, a Manipuri film known as Boom, right? It won award in the BAFTA, that is British Academy of Film Awards, है ना। Yes. So it was actually backed by Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar, and it's a very good film. मतलब मैंने नहीं देखी, frankly speaking, but this is one thing that I will regret, मैं मिस कर रहा हूँ। So कहीं ना कहीं से तो मैं जुगाड़ कर लूंगा मूवी का, किसी न किसी प्लेटफॉर्म में होगी, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन होगा, but I want to see this. And actually we should support the way Manipur is suffering, the way Manipur is like dealing with all those violence, ethnic groups clashing with each others. So मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी न्यूज़ जो है वो उनको काफी पॉजिटिव, काफी बेहतर फील कराएगी। So if you are getting a chance to make sure कि ये फिल्म जरूर देखें। So these were the major news for today from this newspaper. Hmm. BAFTA actually ऑस्कर के बाद, एकेडमी के बाद, one of the most prestigious film awards है, right? सो जो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे ड्रामेटिज्म का या ड्रामेटिक्स का आर्ट है, वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है। दे अप्रिशिएट वेरी प्रॉपरली। अरे ओके, सो चलो अब बात करते हैं आज की मेजर टॉपिक्स की। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं किसका, इंडिया एंड ब्राजील का। क्या ये दोस्त है? The answer is yes. India and Brazil are friend because of some similarities and some मजबूरियां। Right? मजबूरी ये है कि they belong to third world nation, and like मजबूरी ये है कि they belong to the south, global south, and apart from this they are agricultural countries, and apart from this they don't have a major like what we can say defense allies, जो उन्होंने डिफेंस टारगेट ले रखे हैं, they belong to non allies। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देना जरूरी है।
सो ओवरऑल फैशन में अगर हम बात करें तो अभी इंडिया ब्राजील की एक समिट हुई है, आप लाइक यू कैन कॉल इट अ हाईएस्ट लेवल समिट, जिसमें ओवरऑल कुछ 300 बिजनेस लीडर्स, right, some I guess 14 ministers, right, and one of the largest delegation you can see from the Brazil side in India that we are seeing. ये एक बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट लेवल पे हुई बातचीत है, जिसके बहुत सारे implications हैं, and this was one of the high time to have such kind of thing because both the countries कहीं ना कहीं ये परेशान रहे हैं चाचा ट्रम्प के कारण. They were like facing huge amount of tariff by Trump, though after Supreme Court of USA had decided to cut down the tariffs, this is just 10%, but still this is one shock that every country is facing, and their trust on American policy is still not very much, what we can say, positive. Okay. सो ये एक बहुत बड़े लेवल पे एग्रीमेंट इन सारी चीजें करके गए हैं. सो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक टारगेट्स एंड व्हाट आर द की एग्रीमेंट दे एक्चुअली मेड वन बाय वन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्स की. सो दे डिसाइडेड, अगर मैं ओवरऑल फैशन में जॉइंट स्टेटमेंट है उसको कोट करूं, तो द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट लूला सेट एन एम्बिशियस bilateral target of $20 billion to $30 billion over the next 5 years. So उनका ये कहना है कि 20 to 30 billion अपन बढ़ाएंगे in next 5 years. That is going to have like currently जो 15 billion है उससे, right? So India, Brazil are having a trade of 15 billion around every year. They want to increase it by 20 to $30 billion by next 5 years. Second, they go for critical mineral. अभी तुम्हें पता ही होगा इंडिया जॉइंट पैक से लेगा, राइट? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी उन्होंने पैक किया है. they signed the memorandum of understanding with in to cooperate on extraction, processing of critical minerals and rare earth animal. This is a strategic move to build resilient supply chain and reduce reliance on the Chinese import. तो जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, नॉट एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट डिफाइंस एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, राइट? So they are planning to extract a rare mineral together and they want to process it. Then the next agreement is about energy. Yes, the two nations are accelerating their collaboration in the renewable energy. The coalition of a biofuel, sustainable available fuel. Brazil also proposed the co-chairing and coalition for disaster resilient infrastructure, that is CBRI. So energy sustainability की बात करो तो renewable energy है, biofuel है, biodiesel है. ये core areas इसलिए बनते हैं क्योंकि Brazil is one of the largest producer of sugarcane, and sugarcane is primarily used for the biodiesel, biofuels. So if they can get some kind of ties with country like India, who's like achieving a lot in the biofuels, E20 हमने already start कर दिया है, ethanol blending जिसको बोलते हैं, तो definitely they can help each other और energy security जो है वो बढ़ेगी. The next one is digital and technologies. यस, आजकल इसके बिना कोई भी एग्रीमेंट आज की लाइक विदाउट दिस नो पर्टिकुलर एग्रीमेंट टॉक और हाई लेवल समिट or diplomatic meet completes, no? Digital world. So the cooperation was formalized in artificial intelligence and digital public infrastructure like data centers and others, with plans for Brazil to adopt India's unified payment interface. So यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, तीन चीजें एक्चुअली. एआई, राइट, पब्लिक जो डेटा सेंटर्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द डिजिटल वर्ल्ड, data centers, right, and UPI. These three particular things वो major job in the digital जो particular वो है कहना चाहिए facts है. फिर कुछ strategic and diplomatic highlights भी रही इस particular summit की मीटिंग की, which includes the global south leadership, right, which include the counter terrorism. एक एक करके बात करते हैं हम, which include the UNSC reform,
and uh, the visa reforms and the pharmaceuticals. Okay, so what they said हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लोबल साउथ लीडरशिप एंड यूएनएससी को ऐड कर हाँ, India is undoubtedly the leader of Global South. Now, I'll tell you what is Global South. If we'll see an entire globe, globe में एक particular line है जिसे आप इक्वेटर कहते हो. इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होता है. So if we go closely, you'll understand that majority of developed economies or developing economies, that is China, the European Union, Russia, France, Americans, they belong to the northern hemisphere, and all these people belong to the northern leadership. When it comes to south, major countries belong to the third world nation and non-alignments, right? And they are either developing or underdeveloped countries. So they had their own bloc, जिसे ये global south कहते हैं. क्या कहते हैं? Global South. I'll tell you, this is not an official platform or forum where they discuss the issue or this or something like this. This is just a term that has been given to those countries which belong to South, particular, so Southern Hemisphere, and belong to Third World. So both of these countries, Brazil and India, belong to the Southern Hemisphere, Global South. What is the good thing? India is the largest country in terms of population, fourth largest economy, right? One of the most, what we can say, youth population and like having great workforce. On the other hand, Brazil is the fifth largest country in the world in terms of area and population, and it is also an agriculture. I like once an expert like 2 3 years back. I saw his point of view when he was using. If I'll go for Amazon, the eastern coast and eastern part of the Brazil is having agriculture majorly. They are not exploring the southeast or the western part because of infrastructural difficulties. So if they will keep like improving their infrastructure, they can definitely produce huge amount of agriculture product produced. Right, and they can actually create a proper what we can say the food basket for the entire world. So अगर ये दोनों countries साथ में आते हैं तो they can actually manage huge amount of agriculture supply export to the entire world. And that was like apart from this, they both are part of G4. Yes, so G4 में जो countries हैं मैं उनके नाम लिख देता हूँ. India, Germany, Japan, and Brazil. So this is a kind of group or forum which seek mutual and international diplomatic support to get the permanent membership in the United Nations Security Council. They are demanding a change in the charter. They are demanding the change in the structure of United Nations Security Council, and they are demanding that the permanent membership should be extended to those countries as well, which belong to the non-alignment or the no block. क्योंकि अगर तुम ओवरऑल फैशन में यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप स्ट्रक्चर देखो तो यूके फ्रांस एंड यूएसए दे बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड China and Russia they belong to kind of communist world and they both are opposite each other. So if there is a urgent security matter, है ना, that is to be addressed, and one particular party is supporting or supported by either of the bloc, another party was supported by the either of the bloc. तो ये कभी भी एक conclusive judgment decision नहीं बना पाता. But if we will get countries like Germany, Brazil, India, Japan, which are kind of country जो कि genuinely बिना किसी block के काम करती हैं, तो definitely ये एक अच्छा outcome होगा और इससे solutions ज्यादा accessible. तो यूएनएससी के रिफॉर्म की बात की उन्होंने राइट और ओवरऑल फैशन में काउंटर टेररिज्म की बात की बोले दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेलकम एट एनी कॉस्ट वीजा रिफॉर्म्स वगैरह जो है उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर वीजा रिफॉर्म people to people ties to boost tourism, business. Both countries are working like to extend the multi-entry visa from like 5 to 10 years और काफी सारी चीजें. अब कुछ की जो एमओयूज और वो थे क्या कहना चाहिए एग्रीमेंट्स थे जो उन्होंने एक्सचेंज किए उसमें वन ऑफ देम वाज एसोसिएटेड विद द माइनिंग जॉइंट एक्सप्लोरेशन digital joint action plan MSME cooperation right health regulatory cooperation trade agreement expansion between India and Microsoft that is preferential trade deal agreement इन सारी चीजों पे उन्होंने बात की
So, Brazil, India are good ally? Yes. Do they need each other? Yes. They are also part of BRICS? Yes. So, overall fashion में जो ये डिस्कशन हुआ उसकी बात करते हैं. Now, let's get into the politics. Okay. Brazil's president Lula da Silva was one of the first state head to oppose the Trump's tariff policy in calling right? He was the first one to ask BRICS countries to go for a deep dollarization. He was supporting the BRICS currency at the fullest, right? And he's proposing a very proper solution to counter these kind of bullies or domination in the international trade. तो अगर हम प्रेसिडेंट डिसल्वे के साथ काम करते हैं एंड उसके साथ आगे बढ़ के इंडिया भी इसी टाइप की कुछ स्ट्रेटेजिक पर्टिकुलर उसमें आ पाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंडिया के उसमें दूसरी चीज है ब्रिक्स की समिट है राइट बिकॉज ऑफ अमेरिका's pressure that is not I'm saying that is what experts are saying because of American pressure ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस हम कम दिखा रहे हैं again I'm like saying a very important like what we can say critical statement कम दिखा रहे हैं राइट सो दिस इज द टाइम जब हमें समझ में आना चाहिए कि ब्रिक्स इज वन ऑफ द पर्टिकुलर अलायंस जो इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकता है और करता ही है सो इंस्टीड ऑफ शोइंग लेस इंपॉर्टेंस टुवर्ड द ब्रिक्स we should show the mutual cooperation between the BRICS country increase and increase every day because this particular group controls a huge amount of GDP, population, oil, energy resources together, and they can actually form a very proper mutual cooperation bloc that can actually challenge the American and Western allies. तो यस ब्रिक्स को लेके सपोर्ट एक्सटेंड करना एक पर्टिकुलर वो होना चाहिए पॉजिटिव साइन होना चाहिए तो दिस वाज एक्चुअली इंडिया ब्राजील रिलेशन विच व्हाट दे डिस्कस हाउ दे डिस्कस राइट एंड अगेन जो न्यूज में है उसमें वही उन्होंने बात की कि भाई साहब जो यूएन की सीट्स हैं वो उन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके बारे में बात की राइट दीज वर द टू कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैरिफ फेस किया था and he clearly mentioned that a small country negotiating individually always loses. The global south must act together. वही है ना कि यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्ग सो उन्होंने ये सारी चीजें की सो दिस वाज व्हाट द ब्राजील एंड इंडिया रिलेशंस उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया ये सारी चीजें नाउ टॉकिंग अबाउट मोदी जी's upcoming visit to Israel is getting entangled in the tasty domestic politics. So what exactly is happening? Modi ji is visiting Israel very soon, and the opposition leader, that is Yair Lapid, ऐसी कुछ नाम है ना जो opposition leader है भाई he is not very happy with the visit जो उनके स्टेटमेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो he said कि रुक जाओ मैं बताता हूँ एक प्रॉपर स्टेटमेंट है ना उन्होंने बोला कि द सुप्रीम कोर्ट president जो है यूएस के आमिर he to be invited in the Senate right when Mr. Modi is addressing to the House. The thing is कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लीडर होते हैं तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको नहीं बुलाया गया उनके कहने कि दिस इज समथिंग दैट इज नॉट राइट आपको भी ये पता है कि जो नेतान्याहू गवर्नमेंट है एंड करेंट जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इसराइल की वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये थोड़ा सा क्या चल रहा है प्रॉब्लम चल रहा है उन्होंने बोला कि हम नहीं वो करेंगे मतलब हम पीएम मोदी का एड्रेस नहीं वो करेंगे अटेंड नहीं करेंगे राइट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई साहब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में काइंड ऑफ लड़ाई हो रही है सो पाकिस्तान लॉन्च एक्चुअली एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान राइट दे क्लेम टू किल 70 प्लस मिलिटेंट अफगानिस्तान ने सीधे तौर पे उनकी सॉवरेनिटी जो है उस पे ये क्या बोला हुआ है अटैक बोला हुआ है एंड जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट है वो भी उन्होंने लॉन्च कर दी है व्हाट अफगानिस्तान सेड एक्चुअली अगेन थोड़ा सा फनी है बट यू शुड लिसन टू दिस अफगानिस्तान सेड वी हैव अ राइट टू डिफेंड आवर नेशन अंडर द आर्टिकल 2 4 of UN Charter, the prohibition of use force, doctrine of self defense इन दोनों के अंदर हमें सेल्फ डिफेंस का राइट आई मीन these are the people who are allowing domestic violence up to an extent
कि जहां हड्डी ना टूटे. Yes. So a husband can beat his wife until the bones are not break. That is not considered as domestic violence. That is what Afghanistan people or Taliban are thinking. All right. So they said this is a cross-border terrorism and you have violated our right to defend, right, doctrine of self-defense and जो आर्टिकल 2(4) है यूएन चार्टर का जो prohibition of use of force बताता है उसको भी आपने violate किया है. They also said there were 18 civilians which were killed. On the other half, पाकिस्तान का कहना है कि we killed 70 plus militants only. तो अब इनके बीच में भी लफड़ा लोडिंग. हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है. So talking about the top Maoist leader that was killed in the Telangana. Now why this is important अगर हम बात करें तो है ना. So थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं. 31st of March, sorry, 2026, that is coming 1 month, right? This is the deadline with the Home Ministry, right, saying we are going to end the red corridor. Now, what is the red corridor? These are the area affected by the Maoism, Naxalism, है ना. तो अभी के टाइम पे हो ये रहा है कि देर आर लाइक वेरी लेस नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे स्टिल you can find Maoism or Naxalism that is being active, but there are places jahan pe they are still active. So a very less amount of red corridor is being left. The Home Ministry just like got the target कि next 31st of March 2026 तक हम वो red corridor भी खत्म कर देंगे. So ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है ना इसके कई हाई रैंकिंग जो वो हैं क्या कहना चाहिए ऑफिशियल लीडर्स हैं दे आर बीइंग सरेंडरिंग एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस फरवरी 2026 में 6-7 सरेंडर देखे हुए हैं and that is because of 31st March guideline. That is what experts are saying because this was a like a very strict warning कि 31st March तक हम खत्म कर देंगे either you have to surrender or not. सो लास्ट जो 1 साल है 2025 2026 फरवरी में अगर मैं बात करूं तो देर आर सेवरल सरेंडर्स मैंने कुछ लिस्ट अप किए हैं मैं तुम्हें बताता हूँ. सो थिप्पीरी तिरुपति ये जो अभी देव जी सरेंडर हुआ है उसका एक बहुत बढ़िया वो था क्लोज अलाय था द डी फैक्टो जनरल सेक्रेटरी एंड की स्ट्रेटेजिस्ट इन द सीपीआई मार्क्सिस्ट सॉरी माओइस्ट right it was carrying a bounty of 1 crore and he is the highest ranking leader to ever lay down the arms in the history of this particular movement, right? So जो देव जी जिसकी हम बात कर रहे हैं है ना, right, this particular he was actually a de facto general secretary and he was having a bounty of 1 crore. This is the person who laid down his weapon like yesterday, and this is the biggest surrender in the history of a Maoism. Apart from this, Malla Rajan Reddy, that is Sangram, right, a senior member and the member of Central Committee, he also laid down the weapon. The M. Venugopal, also known as Sonu, है ना, the influencing strategist and member of the core secretary, surrendered in last year 2025. Right. This is something जो कि एक टर्निंग पॉइंट था माओइज्म के लिए फाइनल ब्लो में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बत्से सुक्का और जो देवा है उसने भी लास्ट ईयर जनवरी में सॉरी इस साल जनवरी में सरेंडर किया था. फिर पीपी राव जो चंद्रनला है उसने भी लास्ट ईयर अक्टूबर में सरेंडर किया था. सो देयर वर लाइक मेजर 6-7 सरेंडर्स फ्रॉम द लीडरशिप जो आपको देखने को मिलता है जिसमें जनरल सेक्रेटरी द कोर कमेटी मेंबर्स कोर कमेटी स्पोक्स पर्सन पॉलिट ब्यूरो एंड डिफरेंट पर्टिकुलर जो वो होते हैं लेवल ऑफ कैडर होते हैं उन सबको जो है सरेंडर करते हुए देखा गया है. सो ओवरऑल फैशन में जो वो है क्या कहना चाहिए टॉप लीडरशिप दैट इज कोलैप्सिंग. उसके अलावा जो उनके अंडर वर्कर्स हैं उनकी भी जो वो है क्या कहना चाहिए लोअर लेवल कैडर्स जो है वो भी स्टार्टेड सरेंडिंग जो भी बचे हुए हैं. ओके. एंड दिस इज समथिंग जो कि एक ग्रेट इम्पैक्ट वो करेगा. सो जो इन्होंने एनालाइज किया मैं उसको एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में बताता हूँ. द सरेंडर ऑफ देवजी एंड संग्राम डिस्क्राइब्ड एज द फाइनल ब्लो और द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर द आउटलॉर्ड आउटफिट. सो उनका ये मानना है कि देवजी एंड संग्राम इन दोनों का जो पर्टिकुलर सरेंडर है that is something that is going to give the final blow to the red corridor and naxalism in India.
These surrenders, the organization is reportedly left with only one active central committee member. So after these surrenders, just a particular member that is still missing. And from 2025 to 2026, nearly 2,000 Maoist surrenders, including the multiple senior leaders. So ये कहीं ना कहीं एक end of the story को दिखाता है. And जो वो है क्या कहना चाहिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो वो है पैरामिलिट्रीज हैं जो होम मिनिस्ट्री फोर्सेस हैं ये इनके सक्सेस रेट को दिखा रहा है कि किस तरीके से they are working and they are like dedicated to end this particular issue for once for all. एंड दिस इज नॉट जस्ट द सरेंडर कुछ न्यूज जो है वो किलिंग्स की भी रही हैं जो रिसेंटली जिन्होंने सरेंडर नहीं किया फॉर एग्जांपल नंबला केशव राव दैट इज पासा राजू right it was the former general secretary who was killed in the May 2025 after this Devji became the general secretary Ganesh Uike, he was a central committee member, Odisha in charge. He was killed in December 2025. I think we had discussed this. Madhvi Hidma, he was the top commander of this particular wing, and he was also killed in November 2025. So there are two particular things that are happening. Either they are surrendering, or the security force are killing them. Right, assassinating or encounter कह सकते हो, neutralization कह सकते हो. So in both the cases, the top leadership is being divided, the top leadership is being ended, and the lower level cadre they just want to follow the leaders. If they are surrendering, they are also surrendering. So a rise in a leadership might not be there. तो experts का ये कहना है कि अगर कोई नया leader नहीं बनता है, तो definitely this is going to be the end of Maoism or Naxalism. ठीक है what is Naxalism and Maoism? हम थोड़ा सा उस पे चर्चा कर लेते हैं. So this particular term came from China and especially with the Mao Zedong, right? So what they wanted, how they wanted, उसकी बात करें. So Mao Zedong has one of the favorite quote that is, power comes with the within the barrel of a gun. So Mao Zedong actually lead the Chinese Revolution in 1949. And after that, they started behaving like Gabbar, who can take all the decisions using the guns, power, and something like this. A similar sort of incident happened in Naxalwadi village, where people took the arm against the government and administration to save their forest and save their culture, right? As it started from the Naxalwadi village, the term Naxalism came into existence, right? And people started calling them Naxals. They do not like the government policy. They do not want government or administration to interfere. And if they are interfering, they uses firepower, guns like that. So technically, this is wrong. We don't support any kind of violence at any place. And if they are doing so, that is supposed to be suppressed either with the diplomatic talks or with the force. And that is what is happening. And let's hope for the best. We should end these things. The thing is, there are several documentaries, there are several reports which actually like tells us about the problem of tribes. जो ट्राइब्स या आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं या मेनली डिपेंडेंट होते हैं जंगलों पे फॉर देयर लाइवलीहुड फॉर देयर डेली लाइफ they are being compromised with the administration and Maoism. Neither administration nor Maoism understand the true needs of those tribal people and Adivasis. And if one of the party will end, then definitely they can actually talk about what we are needing. There are several movies which you can watch on this. For example, अगर आपने न्यूटन देखी होगी, so you will understand how the area behaves. If you can see a movie from like uh, Manoj Bajpayee's film that is Joram. So if you'll follow this, you will understand that once a Naxali is there, if you even want to change his life, उसको कहीं ना कहीं follow करती रहती है चीजें. So there are several documentaries, several what we can say films you can actually watch on these particular thing. That's what I had like opportunity with my mentors to work with the tribes. जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है उनके साथ हमने पारधियों के साथ बहुत लंबा चौड़ा काम किया है. सो पारधीज लोकल एमपी की ट्राइब्स हैं
which were hunters and gatherers kind of thing. And they are still living in primitive ages, kind of like वो जानवरों की नसों से रस्सियां बनाते हैं. तो if they are being compromised, they are not being provided with proper support administration की तरफ से, then definitely वो कहीं ना कहीं जो youth होता है वो negative direction में जाता है. So let's hope for the best. We get our final solution on this issue, and we should talk about these, what we can say, the people very well. Let's move to the next one. That is Boom. Yes, this is a Manipuri film which won the BAFTA. So अब मैं अगर बात करूं जो statements आए हैं उनकी, तो India is proudly celebrating the moment of BAFTA 2026 as the Manipuri language film Boom won the prestigious Best Children and Family Film Award. So किस language में ये movie? मणिपुरी में. राइट, किस कैटेगरी में गई है? दैट इज प्रेस्टिजियस बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म. खुश हो जाओ बच्चे लोग. चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म. एंड बी पीसफुल. See, it's not going to be very easy, दक्ष, कि तुरंत पीसफुल हो जाना, है ना? The time they faced, right, it's going to haunt for at least like a generation, जब तक नई जनरेशन नहीं आती. बट हाँ, आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बात सुनी जाए. आई मीन पारदीस के साथ जब हमने काम किया तो पारदीस में दोज पीपल जिनको राजा लोग हायर करते थे टू कॉट द एनिमल. So let's say I'm the king of certain state and I want a photo with like I'm hunting a tiger or a lion. So these were the people who actually caught the lion. They will leave the lion within a restricted area. The king, the Raja Saab will kill that particular lion. Then he will put legs on that lion with a gun and he will have photographs click and that photograph will be stick to their palace's wall. And then suddenly the Wildlife Protection Act came and they all become unemployed. They were not getting anything in terms of financial support. Some of them were also involved into the illegal trafficking of the animals. Yes, and like things were critical. Schools वगैरह है, but nobody wants to be there. तो है, अभी उनको टाइम लगेगा to get out of it. But let's hope for the best. It's a good beginning. It's a positive beginning. And yes, good thing takes time. So let's hope for the best. So Manipuri film that is Boom won the Best Child and Film award in the BAFTA. Right. The film is an emotional drama and so one of my favorite filmmaker, one of the smartest filmmaker in Indian film industry. Farhan Akhtar जो है, right? He actually supported the film and what we can say, like जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को समझा, जिस तरीके से सपोर्ट किया, वी शुड एक्चुअली थैंक हिम फॉर अंडरस्टैंडिंग सच काइंड ऑफ फिल्म. एंड ये फिल्म जो है एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फिल्म्स के बीच में जीत जीत के आई है. Right, for example, Zootropolis 2 is there, Arco, Lilo and Stitches are there. These are very good film. मैंने देखी है इनमें से कुछ एंड दे आर वेरी गुड फिल्म और उनके बीच में ये फिल्म जीत के आई है. सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट टू इंडियन सिनेमा स्पेशली फॉर दो फिल्म्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट का सिनेमा जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव है, काफी ज्यादा व्हाट वी कैन से रियल दिखता है. आई हैव सीन सम ऑफ द फिल्म्स आसामीज बंगाली बंगाली सिनेमा तो फिर बहुत लेवल आगे हो चुका है. Assamese, like Manipuri, and some other particular reason. I have seen those films. I have friends from those places जिन्होंने थिएटर और आईएफटी वगैरह में काम किया हुआ है. They studied about it. So I know that they are very much keen for the very real content. Right? तो ये एक नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत 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 ये कहना चाहिए वेलकमिंग वो है. और स्पेशली मणिपुर के लिए बिकॉज यू नो हाउ द थिंग्स आर इन मणिपुर. Right, the movie is simple, honest story from like जो इधर लिखा हुआ है मैं उसकी बात करूं. मैंने देखी नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ. सो मानना है कि फिल्म इज अ सिंपल ऑनेस्ट स्टोरीज फ्रॉम द रीजन इंडिया and they that connect with the audience around the world. Farhan Akhtar attended the ceremony
with his wife Shivani Dandekar. क्या है फिल्म, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं? सो इट वाज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी. सो जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी. Right. And the story is about a young boy living in Manipur during the time of social and political tension. Title means boom का मतलब है, the title means little boy in Manipur. Right. And there were several particular actors which played a critical role in this particular film. This particular boy, actually the story मैंने को बताई हुई है कि जब political और वो social tension होता है तो he got separated with his family. और वो अपने पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही है. Want to search his father after this particular political turmoil and social tension. So धीरे धीरे करके वो जो भी कहानी अनफोल्ड होती है वो ये. And the movie was released in last year in September, and it was on like shown in the several international film festivals. But and like that was praised, whether that is Toronto Film Festival, Cannes, right, Bengal Film Festival, Mami Mumbai Film Festival, the Vasa Film Festival, and it receives praise from the critics. राइट, तो ओवरऑल फैशन में ये काफी अच्छी फिल्म है. मौका मिले तो जरूर पढ़ना, देखना. एमिड एसआईआर पुश, कलकत्ता हाई कोर्ट फॉर्म्स अ पैनल टू मैनेज केसेस. सो भैया वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब जो है जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है शुरू हो चुका है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा निकल के आए. Okay, so Congress protest shows its ideological bankruptcy, says Prime Minister. So कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट था एआई इम्पैक्ट समिट में, उसको मोदी जी ने आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी कहा है. Right? And AI Impact Summit, the turning point in use of technology. Please do not talk about गलगोटिया ना. मैंने इतना देख लिया सोशल मीडिया मीडिया यूट्यूब में कि अब मैं थक गया हूँ गलगोटिया से. खैर बात करते हैं कि क्या रहा एआई इम्पैक्ट समिट की स्ट्रेटेजिक आउटकम. We discussed about the motive. We discussed about the process, what exactly happened, visited, what things they planned. Now let's come to the conclusion. अगर हम AI Impact Summit की बात करें, तो first thing that is न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, है ना. जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, दैट इज समथिंग जो कि आया. दिस इज अ ग्लोबल consensus establishment AI as the shared global good, right, emphasizing the equitable benefit sharing across the humanity. फिर the AI commitment, New Delhi Frontier AI commitment, that is another document जो है वो रिलीज हुआ, Frontier AI commitment, है ना. And this is about a voluntary framework focused on inclusive and responsible AI development, bridging the gap between global south need and frontier AI technology. So this is a kind of framework proposed, है ना, कि भाई हम किस तरीके से एक एआई फोकस्ड लाइक इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल एआई बना सकते हैं. देन मोदी जी ने जो मानव विजन दिया था वो तो था ही, है ना. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आउटकम होना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट. सो ओवरऑल 250 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लेज किए गए, राइट. एंड इनमें से 20 बिलियन डॉलर जो है दे आर बीइंग गिवन टू द डीप टेक वेंचर कमिटमेंट. जो ऑपरेशनल हाईलाइट है अगर मैं उसकी बात करूं, तो वी हैड sovereign AI model. So there are several made in India models, including Bharat Gen, right? This is a 17B parameter multilingual model, and Sarvam AI, right? And next one was uh, Nani AI, right? So there were several Indian-made AI जो कि अपने फाउंडेशन फेजेस में हैं. दे आर वर्किंग एक्सट्रीमली वेल. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश के लोग काम कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो वर्किंग एंड द वे वी डू थिंग्स. मैं बहुत जल्दी देखूंगा कि भाई दुनिया हमारी एआई यूज कर रही है, राइट. सो सॉवरेन एआई हमें मिले हैं. फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एक्सपांशन ऑफ इंडियन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी with plan to add 20,000 GPUs, right? Hello, Anamika.
टू द एग्जिस्टिंग बेस। सो अलग अलग उसमें ग्लोबल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगाने की बात की गई है। इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट मोस्ट प्लेज हैपन फॉर द एआई इन द 24 आवर्स। ये कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं है ना? फ्रेमवर्क, यस, we don't have any particular international convention or the framework for the AI. So this particular summit actually focused on that particular thing. So ये एक अच्छी चीज है कि जो framework पे focus start हुआ. Coming days में we might come with a law, the framework or a convention that can actually unite the world's AI into one particular frame. This is something that we are supposed to do with the AI. So ये एक अच्छी particular initiative है. Uh, कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे हैं, चैलेंजेस भी रहे, फॉर एग्जांपल जो व्हाट वी कैन से मिसमैनेजमेंट हुए हैं कि गैजेट लॉसेस हो गए हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, रोड ब्लॉक हो गई है, पैदल चलना पड़ रहा है, सो वो फिर जो एक और मेजर क्रिटिसिज्म था दैट वाज रोबोडॉग कंट्रोवर्सी फ्रॉम द गलगोटे यूनिवर्सिटी। दे सेड कि भाई साहब ये हमने को खुद बनाया बट दैट टर्न्ड आउट टू बी चाइनीज। बाद में उन्हें स्टॉल छोड़ के जाना पड़ा। सो मिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, इंडियाज फॉर्मल दूरदर्शन, राइट, ऐसे कई सारी चीजें हुई तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। फिर प्रोटेस्ट जो हुई वो भी एक चैलेंज था। जो इंडियन यूथ कांग्रेस से दे प्रोटेस्टेड सेइंग द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इसके कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी जो है ना वो देखने को मिलती है। बट ओवरऑल फैशन में अगर कुछ टेक एक्सपर्ट की बात करें तो दिस वाज अ काइंड ऑफ एक्चुअली 70-30 केस। 70% दिस वाज अ विन समिट, क्योंकि इंडियन जो है अभी एआई के बारे में बहुत लिमिटेड जानते थे। नाउ दे अंडरस्टैंड व्हाट एआई। Now, the investors and the large player who are not dealing with the AI, now they understand India has potential and India is like working on those particular AIs. So they might be interested in that कि भैया हम invest करें और आगे बढ़ाएं। तो let's hope for the best कि आगे चल के हमें वो particular outcome मिले। ठीक है। एंड उसके बाद ओवरऑल फैशन में, अच्छा ये दो चीजें जो है ना उसको जरूर पढ़ना। दिस इज अबाउट द विमेन रिजर्वेशन एक्ट, राइट। सो अपन ये बात कर चुके हैं एक दो बार वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की, जो 2025 में आया था। सॉरी ना, 2025, 2023 सितंबर स्पेशल सेशन, राइट। तो वो किस तरीके से आगे उसको चैलेंज होगा, सेंसस, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में जो एस वाई कुरैशी है, ही वाज द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनके बारे में पढ़ना। ही इज लाइक इट्स अ वेरी गुड एडिटोरियल। फिर टैरिफ्स एंड ट्रैवल, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रम्प चचा, राइट, ये भी एक अच्छा एडिटोरियल था। Rest, if you want to understand why the Jammu Kashmir and Himachal, Uttarakhand, these apple traders are not happy with the India-US trade deal, राइट, ये एडिटोरियल पढ़ लेना। हमने पहले भी बात की कि जब टैरिफ कम होंगे तो बाहर का माल आना आसान हो जाएगा। सो ये एक अच्छा वो था। टॉकिंग अबाउट द बिजनेस न्यूज, बहुत ज्यादा तो वो नहीं था, बट इंटरनेशनल न्यूज में चीजें हैं। ईरान वॉज राउट द राइट टू सेल्फ डिफेंस बट सीज डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इन यूएस टॉक। क्या इंडिया यूएस ईरान के बीच लड़ाई हो सकती है? 80% यस। Yesterday, I was watching one of the particular videos from the expert in the Western world, and he clearly mentioned there are 90% chances that US and Iran are going to fight with each other. He mentioned two, three things. First thing, the Trump actually had a huge, what we can say, blow by the Supreme Court of USA. And the second thing, people, if Supreme Court can reject the tariff policy of Donald Trump, it can also talk about his name and involvement in the Epstein file. So he wants to divert the entire attention from there to Iran. So this is like it's going to be a high chance that they can fight. 10% they are not going to fight, because if this has happened, this is happening, and it is Iran and Israel also got to involved together, it can create a huge possibility of World War III, but there is very less chance कि ऐसा होगा। सो फाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो ईरान ने बोला कि भैया हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हैं, हम ऑथराइज हैं और हम उसकी प्लेज लेते हैं, एंड बट हम यूएस के साथ एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं।
नो थैंक्स, ग्रीनलैंड पीएम रिजेक्ट्स द ट्रम्प हॉस्पिटल शिप। यस, ट्रम्प का जो नेवल हॉस्पिटल शिप था जो आर्कटिक आइलैंड्स को जाने वाला था, जो ग्रीनलैंड को, उन्होंने बोला नो थैंक्स, वापस ले जाओ। राइट, नहीं चाहिए। तू आदमी खराब है ट्रम्प, तू नहीं चाहिए मेरे को। तो जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि चले जाओ। है ना, उन्होंने बोला कि लाइक इट्स नॉट ऑटोनॉमस टेरिटरी एंड दिस इज अ नो थैंक्स फ्रॉम अस एंड वी हैव लाइक वी व्हाट वी कैन से हेल्थ केयर सिस्टम कैन मैनेज इट। तो उन्होंने मना कर दिया। रेस्ट, मित्रों, कल के मैच का याद मत दिलाओ। मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब क्या ही बोलो। जिस तरीके का मैच हुआ ना, आई आई हेटेड इट। अबे मतलब कौन करता है ऐसा? बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम हार गए तो हार गए, इट्स मैच। बट हाँ, थोड़ा तो दुख हुआ, सपना टूटा थोड़ा सा, अभी नहीं, जीत तो जाएंगे क्या। सो दिस इज इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। रेडी फॉर क्विज एवरीवन? ओके, चलो, सो शुरू करते हैं। So Brazil's president Luiz Inácio Lula da Silva suggested countries facing US tariff should, है ना, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है लूला डे सिल्वा, उन्होंने इंडियन प्रेसिडेंट में सजेस्ट किया कि जो भी कंट्रीज जो हैं वो यूएस टैरिफ फेस करिए, उनको क्या करना चाहिए। ऑप्शंस आर फाइल केस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली, impose counter tariff immediately, right, form a negotiating bloc, withdraw from the BRICS। बताओ। जीतने का क्या है भाई? जीतेंगे यार, ऐसा मत बोल दक्ष भाई, मेरे को बहुत दुख होगा। मतलब एक तो बहुत मुश्किल से क्रिकेट में वापस इंटरेस्ट आ रहा था एंड सडनली दे लॉस्ट इट, तो थोड़ा सा तो दुख हुआ। खैर, करेक्ट आंसर इज सी। ही सेड कि भैया एक साउथ, ग्लोबल साउथ का निगोशिएटिंग ब्लॉक बनाए, क्योंकि इंडिविजुअली अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल लूज, राइट, बट इफ वी विल फॉर्म अ ब्लॉक देन डेफिनेटली द चांसेस फॉर negotiation in our favor will increase। ठीक है, next one. Lula called for a reform in which global body seeking permanent membership for India and Brazil। बताओ, किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल बॉडी के रिफॉर्म्स के लिए जो लूला है उन्होंने एडवोकेट किया परमानेंट मेंबरशिप के लिए फॉर इंडिया एंड ब्राजील। ऑप्शंस आर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी एंड G20। बताओ मित्रों। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर है सी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमने G4 की बात की, हमने ये भी बात किया कि दीज आर नॉट द कंट्री, ये वहां पे जापान भी होगा एंड जर्मनी भी होगा। राइट, वेरी गुड गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Prime Minister Narendra Modi is expected to address which country's parliament, the Senate, during the visit, right? किस देश में मोदी जी जाके सेनेट को क्या करने वाले हैं या पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले हैं रिसेंट नेक्स्ट उसमें कमिंग डेज में? इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड रिस्पॉन्ड, वेरी गुड, वांट एट माय एज। इजराइल। अपन ने बात भी की, कंट्रोवर्सी चली रही है कि जो ओपोजिशन है वो बोल रहे हैं कि हम बायकॉट करेंगे अगर चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। पाकिस्तान क्लेम
to have killed militants belonging to which band outfit in the border strikes? इसमें से किस बैंड आउटफिट या बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मिलिटेंट्स को मारने के क्लेम पाकिस्तान ने किए हैं रिसेंटली? ऑप्शंस आर लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा। बताओ। ओके, ऋषि पंडा का कहना है सी। अदर्स? Yes, the correct answer is तहरीक-ए-तालिबान. I mean, think about it. लश्कर-ए-तैयबा और एलईटी ये तो डिसीजन मेकर्स हो गए ना पाकिस्तान में. Sorry. Pakistan is the base for this particular organization. ISIS is not active, Al Qaeda is not active. So yes, तहरीक-ए-तालिबान Pakistan is the correct answer. ठीक है? चलो next question. The Sanयुक्त Kisan Morcha (SKM) wrote to Draupadi Murmu seeking the dismissal of which union minister? सो जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उनको लेटर लिख के किस मिनिस्टर के डिसमिसल की डिमांड की है? राइट। ऑप्शंस आर श्रीमती निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह। बताओ। नॉट ए। ना ना बेटा, ए नहीं। बच्चे, पीयूष गोयल। हाँ, he is the Ministry of Commerce. संयुक्त किसान मोर्चा is agree or what? That is USA India trade deal. Right. And who is the chief negotiator for this? That was our Minister of Commerce, है ना, and Corporate Affairs, that is Piyush Goyal. So the Sanयुक्त Kisan Morcha demanded, they wrote a letter to Draupadi Murmu and they put out several different points. Right, है ना? And they mentioned that Piyush Goyal's negotiation and opening of agricultural sector is not welcoming, so we want his dismissal. Right? So Piyush Goyal is the correct answer. क्या कह रहे हो तुम? No way somebody, someone writing Amit Shah. No, they didn't write Amit Shah. They wrote for the Draupadi Murmu, the president of it. Right? And Amit Shah बेचारे क्या कर लेंगे? He's the home minister. Right? हाँ, घर के बाहर का काम तो ये लोग देख रहे हैं. The Save Kisan Morcha alleged the withdrawal of import duty of mixed crop will harm the domestic farmer. सो संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि इनमें से किस पर्टिकुलर क्रॉप की इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से फार्मर्स को नुकसान होगा? ऑप्शंस आर व्हीट, शुगर केन, कॉटन, राइस। बताओ। द करेक्ट आंसर इज कॉटन। यस तक्ष, करेक्ट है। राइट। कॉटन इसलिए क्योंकि कॉटन इज अ कैश क्रॉप, लाइक शुगर केन इज आल्सो कैश क्रॉप, एंड कॉटन इज एन इंडस्ट्रियल क्रॉप। लाइक जो चीजें हुई हैं बांग्लादेश के साथ जो हुआ है, जो इंडिया के साथ हुआ है, एंड अमेरिकन्स आर हैविंग कॉटन फार्म, लाइक कॉटन फार्मिंग व्हिच इज हाईली सब्सिडाइज्ड। तो अगर अमेरिकन्स कॉटन फार्मिंग करके यहाँ बेचते हैं तो वो कॉटन फार्मर्स जो हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, एंड दैट इज व्हाट दे मेंशन। वेरी गुड भाविक। चलो नेक्स्ट। The Calcutta High Court formed a panel following the direction from which apex body regarding the SIR? इसमें से किस एपेक्स बॉडी के ऑर्डर के कारण कोलकाता हाई कोर्ट ने एक पैनल बनाया है फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? ऑप्शंस आर इलेक्शन कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द लॉ कमीशन। बताओ। Won't act by, so like for now everything is being withdrawn and there is a 10% tariff.
वी विल डिस्कस अबाउट इट, है ना, कि इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब होगा, एंड हाउ द थिंग्स हैपन। तो वैसे यस्टरडे हमने जो लास्ट सेशन था उसमें डिस्कस किया था, बट एक और वीडियो हम करेंगे जो इंडिया यूएस के ट्रेड डील का जो अब आगे भविष्य होने वाला है उस पे, राइट। तो उस पे एक डिटेल डिस्कशन होगा, लोड मत लो। सो करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो जुडिशियल इंटरवेंशन है इन द एसआईआर वो बात की थी कि अब वो होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा टू डिस्कस अबाउट दी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी केसेस, राइट। तो वहीं पे हाई कोर्ट जो है, कैलकाटा हाई कोर्ट, उन्होंने क्या किया है, एक पैनल बनाया है फॉर दिस केसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी बंगला युवा साथी स्कीम, right, launched in West Bengal, provides monthly assistance to the unemployed youth aged, राइट। जो बंगला युवा साथी स्कीम है जो वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुई है, वो मंथली जो असिस्टेंस जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को किस एज ग्रुप में देने वाली है। ऑप्शंस आर 18 टू 35, 18 टू 40, 20 टू 40, 21 टू 40, 25 टू 45। अबे क्या चल रहा है, तुम लोग दो दो आईडी से बात कर रहे हो? हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 टू 40। सो मित्रों, फ्रीबीज सीजन इज व्हाट, इलेक्शन सीजन। सो इलेक्शन सीजन फ्रीबी सीजन हो जाता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। The three terrorists gunned down in Kishtwar were reportedly linked to. So किश्तवाड़ में जो तीन टेररिस्ट जिनको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, राइट, निपटा दिया है बाबा, वो किस ग्रुप के थे? हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस, लश्कर ए तैयबा। बताओ। उनके भाभी का कहना है डी, ऋषपर्णा का कहना है डी, और कोई? द करेक्ट आंसर इज बी, जैश ए मोहम्मद। अरे मतलब हर जगह तुम लश्कर ए तैयबा को पीट रहे हो, अभी बेचारे डाउन है यार, हमने एयर स्ट्राइक वेस्ट स्ट्राइक करके सिंदूर में उनके ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स वगैरह इन सबको निपटाया हुआ है, तो ये थोड़े से अभी कमजोर हैं बेचारे। अभी इनको उठने में टाइम लगेगा, अगर ये उठ पाए तो, राइट, नहीं तो इन्हें उठा तो दिया गया ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। Telangana police reported the surrender of top Maoist leader believed to have succeeded D. Nambala Keshav Rao, as he has known as। इनमें से कौन सा टॉप माओइस्ट लीडर जो है पुलिस से हमें सरेंडर करता है, जिन्होंने नंबला केशव राव को सक्सीड किया था? ऑप्शंस आर किशन जी, गणपति, देव जी, या आजाद। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स? सो the similarity is they both are Pakistan backed terrorist organization. The difference is एक खुद को लश्कर बुलाता है, who's a fighter, एक जो दूसरा है वो ये बुलाता है कि भाई हम जो है आजादी के लिए लड़ रहे हैं कश्मीर, राइट। दे बोथ आर, मतलब इनके पास कोई काम नहीं है, ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आते हैं कि हम कुछ धमाल करेंगे, एंड इंडियन फोर्सेस जस्ट नोटिसेस देम, एंड देन उसके बाद दे प्ले सम हाइड एंड सीक, और उसके बाद थप्पा हो जाता है और वो सीधा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज देव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया
is considering restriction on mobile phone using below the use for children below the age, राइट. सो कर्नाटक चीफ मिनिस्टर जो है वो मोबाइल फोन यूज बच्चों के लिए किस उसमें कंसिडर करें रिस्ट्रिक्ट करने की ऑप्शंस आर 14, 15, 16, 18. बताओ. 16, ओके. अदर्स. द करेक्ट आंसर इज 16. मेरे को लगता है 18 तक होना चाहिए. तुम्हें क्या लगता है? व्हाट्स योर सजेशन? आई जस्ट वांट, जब तक आप कॉलेज नहीं जाते तब तक आप सेलफोन की जगह बुक्स के साथ और दोस्तों के साथ खेलो. राइट. यू हैव कंप्यूटर फॉर एक्सेसिबिलिटी. आप कंप्यूटर से जो भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहो, जो भी स्टडी करना चाहो, करो. बट आफ्टर 18 यू शुड स्टार्ट यूजिंग सेल फोन, जिससे एटलीस्ट कम्युनिकेशन की वैल्यू हो. आप मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 18 के पहले तुम्हें फोन देना ही नहीं चाहिए. तुम सब के सब गंदे बच्चे बन जाते हो फोन लेने के बाद. Yes, like I have seen kids these days, they stick to the phone like every day, like all the time. They stop playing, they stop going outside. Even they are going outside, let's say if दोस्तों के साथ किसी कैफे गए हुए हैं तो उसमें भी फोन यूज कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं. They think this is life. I don't think this is life. And it's a welcoming decision. Karnataka, like I'm proud of you. जल्दी जल्दी ऐसे कुछ भयंकर से decision all. India won its first BAFTA award in the Best Children and Family Film category for the which movie? इंडिया जो है अपना पहला बाफ्टा अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन इन फैमिली फिल्म कैटेगरी जीतती है. किस मूवी के लिए, किस फिल्म के लिए? ऑप्शंस आर आरआरआर, कांतारा, बूंग, द केरला स्टोरी. बताओ किस फिल्म को बाफ्टा मिला, इंडियन फिल्म? बताओ बताओ. द करेक्ट आंसर इज बूंग. So internet is really helpful. To be honest, you can talk someone in Russia, another you can talk someone who passes in Germany. We can even learn microeconomics from home. It's useful. हाँ. एक बार मैंने बोला कि फोन ब्रेसिक कर देते, कैसे पैनिक हो रहे हो? I think you have computer to talk about it. You have computer to access these things. मोबाइल इज नॉट समथिंग जो मुझे लगता है कि आपके लिए जनरली यूजफुल होगा. खैर, like you see your activity, like which is more productive when it comes to the study and internet accessibility. अगर आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात करो तो आई थिंक द कंप्यूटर्स आर मोर इफेक्टिव देन मोबाइल. खैर ठीक है, चलो. दी 79th बाफ्टा अवार्ड आर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बाफ्टा ऑर्गेनाइज कराती है? ऑप्शंस आर ब्रिटिश फिल्म काउंसिल, रॉयल फिल्म सोसाइटी, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एंड बीबीसी स्टूडियो. बताओ. इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी की तो डिनाई कर ही ना. आई वांट यू टू एक्सेस इंटरनेट, but I don't want you to access internet through mobile phone. That's what my idea is. I want you guys to have a proper daily routine. Wake up early in the morning, revise what you studied yesterday, right? Then go for school. स्कूल में पढ़ाई करो, फिर आओ थोड़ा होमवर्क करो, शाम को दोस्तों के साथ खेलने जाओ, प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, गिप्पी, जो जो आप खेलना चाहो वो खेलो. Then come back, spend some time with family, study a bit, have dinner, go for books, revise it or read it. You can read other books as well. Then sleep for like 7, 8 hours. Good sleep, right? Wake up in the morning, repeat the same thing. You'll see this is going to be a genuinely good life. The thing is, you guys are our future, right? We want to be healthy by mental, like in terms of mental health.
and physical health. And I think leaving phone will actually help you. The student should be taught how to operate cameras, computer, and other gadgets like printers, etc. डेफिनेटली यार, किसी को ये सिखाने की आजकल जरूरत नहीं होती, घर में ही लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि दे कैन एक्चुअली टीच यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. सो आई बिलीव कि दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर लाइक वंस यू आर इन कॉलेज you need to communicate, you have cell phone, now you are not addictive to cell, right? You are now a person who's more logical. Your brainstorming is in your brain. You just not directly go for like calculator when you are adding 4 plus 5. So I think that can be a good decision. Okay, this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed the session, right? तुम्हें मजा आ रहा होगा. वैसे मेरे को भी पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़पेपर में काफी मजा आ रहा है. I'm not sure. I'm biased, but जब से ट्रम्प को ना चाटा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से यूएसए की, then like after that I started feeling more happy. So I cannot still like express it more casually, but yes, and the news is getting good. Let's hope for the best. And this is it for today from my side. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See you guys. Good day. Okay. Interesting. क्योंकि ट्रम्प को वो पढ़ रही है तो that's interesting.